Hello everyone, welcome to this next episode of Market Ruburu. Today I don't have Raju Ranjan here, but I have Prasid with me here. We'll be talking about radar. In fact, we have a lot of interest shown by many people about the various features on radar, and we thought let's make another video because there are so many features and people are wanting to know which ones are best to use. So, and the point is, even in radar, we are continuously adding new features. So, Prasid, last time after we spoke, और कौन से feature add किए हैं radar में? So as the earnings season has been started, so we have added a tool for quarterly result snapshot. Okay. यहाँ पे आपको आज तक जितनी भी कंपनीज का रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो वो सारी कंपनीज का रिजल्ट का स्नैपशॉट यहाँ पे मिल जाएगा. सो लेट से अगर रिलायंस का मुझे देखना है तो रिलायंस का एक ही ओवरव्यू में मुझे आई कैन सी दी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एज वेल फॉर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एज वेल. एंड मोर ओवर हमने यहाँ पे सिलेक्ट मार्केट एंड सिलेक्ट ग्रुप का भी ऑप्शन दिया है कि अगर किसी को सिर्फ एनएससी एंड सिर्फ आईटी कंपनीज के अगर किसी को एनी ऑफ द ग्रुप, यस, सो इफ समवन वांट्स टू सी रिजल्ट फॉर ओनली आईटी कंपनीज तो वो ग्रुप सिलेक्ट कर लेगा आईटी एंड यू कैन सी ऑल द आईटी कंपनीज दैट हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट फॉर क्वार्टर 3 ऑफ FY23. एंड और ये हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू for this page to update? So अगर आज रिजल्ट है तो the website gets updated tomorrow itself. So next day, maybe at the end of the day tomorrow. No, so today end of the day only it will be updated. Okay, so by 12 कल PM. सुबह दिख जाएगा. Okay. At 12 PM it will get updated and कल सुबह you can see the snapshot of the result. And moreover यहाँ पे एक बार सारे IT index का रिजल्ट आ भी गया उसके बाद I can also sort the columns. कि मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर इन दी आईटी तो सबसे ज्यादा परफॉर्मर नेट प्रॉफिट किसने ग्रो किया है तो आई कैन सॉर्ट द कॉलम्स एज वेल. अच्छा, दिस इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ग्रोथ. यस, दिस इज ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ. एंड ऑल्सो आई कैन लाइक डायरेक्टली गो टू द डिटेल्ड पेज फॉर द कंपनी. जैसे परसिस्टेंट का हम देख रहे थे क्वार्टरली रिजल्ट का स्नैपशॉट, तो उसके नाम पे इफ आई क्लिक तो आई कैन गो टू दी कंपनी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस का पेज वेयर आई कैन सी दी डिटेल्ड एनालिसिस फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स एज वेल. Okay, so this is an interesting feature which people can start using. And of course, I must remind you that radar with so many features, it is completely free of cost to anyone who has a Demat account with Definedge Securities. You just have to use your credentials, log into radar.definedgesecurities.com, and all these features are free to use. So now let us take some scanners which because again some people have said कि इतने सारे scanners हैं, and again we said user defined भी हो सकते. तो if you can show a few more scanners compared to what we had discussed last time. So I will be talking about couple of scanners आज. तो one of the scanner which I track is a turnaround scanner, जिसमें जो year on year last year December quarter में लॉस किया था पर इस साल के December quarter में कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस किया है. तो हाउ कैन वी फाइंड दिस कंपनीज? तो आई कैन सिंपली गो ऑन क्रिएट न्यू स्कैनर एंड हियर आई विल टाइप क्वार्टरली नेट प्रॉफिट. So you have to just type QUAR या QK, तो उसके नीचे सारे सजेशंस आ जाएंगे एंड देन आई कैन क्लिक ऑन द क्वेरी आई वांट एंड देन आई विल पुट इन द एरो दैट इज ग्रेटर देन 0 कि इस बार का क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो 0 से ज्यादा है. So that means the quarterly profit is in positive. And I will also put a query for next net profit 4 quarters back. तो मतलब 4 क्वार्टर हो चुके लास्ट ईयर के दिसंबर से इस साल के दिसंबर में देयर आर 4 क्वार्टर्स. तो 4 क्वार्टर्स के हिसाब से आई कैन पुट द क्वेरी नेट प्रॉफिट 4 क्वार्टर बैक वाज लेस देन 0 कि लास्ट ईयर 0 से कम उसने नेट प्रॉफिट किया था. दैट मींस द नेट प्रॉफिट वाज इन नेगेटिव एंड मतलब लॉस. या लॉस. हाँ, टर्न अराउंड देखना है तो लास्ट ईयर इट हैज टू बी इन लॉस and now in profit. Exactly. So if I run this query, I can see then I will have to click on this button which will show ki only scan companies. Yeah, I think even can this be sorted even before scanning कि I want to see only NSE stocks? No. So एक बार scan होने दो, scan के बाद ही we can select क्योंकि the scanner will run on all the companies. Okay. And then we can bifurcate. So you mean to say just now within something like 10 seconds it scanned all NSE and BSE stocks? It scanned even less than 10 seconds. I said slightly more. In fact, it was in just couple of seconds. Yes. So if I click on this button, then it will show me the list of companies of which they have announced result for quarter 3. Current quarter.
एंड इसमें वी कैन सी कि टाटा मोटर्स ने लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में 1300 करोड़ का लॉस किया था एंड दिस क्वार्टर दे हैव पब्लिश्ड द नेट प्रॉफिट एज 2939 करोड़ पॉजिटिव नंबर. तो दिस मीन्स कि लास्ट ईयर लॉस किया था एंड इस साल प्रॉफिट किया है. Okay. And even for these scans, I can run this scan on a specific group as well. So if I want to see कि ये जो टर्न अराउंड हुआ है वो सिर्फ निफ्टी 200 स्टॉक्स में अगर मुझे देखना है तो I can run on Nifty. So just select that group and only that will be displayed. Exactly. So Nifty 100 में सिर्फ एक कंपनी ऐसा है जिसने टर्न अराउंड शो किया है. That is Tata Motors. Okay. That is Tata Motors. एंड ये हमने किया ईयर ऑन ईयर, जैसे मतलब लास्ट ईयर के दिसंबर के क्वार्टर को कंपेयर किया दिस ईयर के दिसंबर क्वार्टर से. इफ वी वांट टू सी द टर्न अराउंड फॉर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कि सितंबर क्वार्टर में लॉस किया था बट दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट किया, तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट 4 क्वार्टर्स बैक डाला था क्योंकि दिसंबर 2022 इज 4 क्वार्टर्स बैक. राइट. एंड वी वांट टू चेक 1 क्वार्टर बैक, दैट इज सितंबर क्वार्टर का. तो यहाँ पे सिंपली आई विल पुट इन 1 क्वार्टर बैक. तो वही सेम क्वेरी रहेगा कि इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0. So 1 quarter back less than 0. या तो दिस वे आई कैन सी द रिजल्ट एज कि मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 5 कंपनीज ऐसी है जिसने लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में लॉस किया था बट दिसंबर क्वार्टर में दे हैव पब्लिश्ड so this is sort of more of a kind of a short term yes, turnaround. Exactly. And these 5 companies are just for Nifty 100 stocks. So if I click on, let's say mid cap किया तो so if I 500 sorry Nifty 500. Okay, so if I go for Nifty 500, तो Nifty 500 में there are 11 stocks. तो यहाँ पे ऊपर ही you can get the number of stocks that have those are coming into my query. Scan, yeah. तो इसमें we can see JSW Steel आया है, तो metal index is getting stronger. तो this can be looked into in the same way. तो इसके बाद मतलब ठीक है फंडामेंटली वी आर गेटिंग टर्न अराउंड स्टॉक बट दैट डज नॉट मीन नेसेसरीली कि टेक्निकली आल्सो देयर माइट बी केसेस वेयर फंडामेंटल टर्न अराउंड है, चार्ट्स पे भी टर्न अराउंड है. देयर माइट बी केसेस वेयर फंडामेंटल टर्न अराउंड है बट चार्ट्स पे नहीं है. डेफिनेटली. सो देन यू कैन सॉर्ट इट एंड देन लुक एट ईच चार्ट. जो कंपनीज में टर्न अराउंड फंडामेंटल्स में टर्न अराउंड आया है पर द स्टॉक इज टेक्निकली द स्टॉक इज स्टिल वीक, तो उसमें वी कैन सी इफ देयर इज एनी चांस ऑफ रिवर्सल और नॉट. तो उसमें वी कैन इवन प्ले अ रिवर्सल ट्रेड. And not just this, we can even add more queries in the same scanner as well. So if I want to see कि net profit तो मतलब turn around तो हुआ है, loss से profit नहीं हुआ है, उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि FII holding जो था इस क्वार्टर का FII holding is greater than FII holding 1 quarter back. तो मतलब FII ने भी इंक्रीज किया अपना स्टेक एंड प्रॉफिट भी लॉस में से प्रॉफिट हो गया, कंपनी टर्न अराउंड हुआ. एंड इफ आई सी दिस ऑन ऑल स्क्रिप्ट्स for both NSE and BSE, तो there are total 12 scripts जिसमें FII ने भी इंक्रीज किया है होल्डिंग एंड प्लस लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है कंपनी. Okay, so now let's say you want to edit add one more query, so you just click on edit query. So we can add as many queries as we want. So this is one of the example how you can identify or you can find stocks that are turning around. One another type of scanner or query that I run is seeing the companies in which the promoter, FII and DII, all three are buying or adding their stakes in the company. So for that scanner, I will put in the query promoter holding is greater than promoter holding 1 quarter back. कि लास्ट क्वार्टर में जो प्रमोटर का होल्डिंग था उससे इस क्वार्टर में ज़्यादा है. In the same way, DII holding is greater than DII holding 1 quarter back. Okay. And in the same way, I will put in the query for FII also. FII holding greater than FII holding 1 quarter back. And इसके साथ साथ, so if we run this query, so we can know कि there are only 29 stocks out of the total universe of more than 5,000 companies, both NSE and BSE included. तो उसमें से सिर्फ 29 कंपनीज ऐसी है जिसमें प्रमोटर, FII एंड DII तीनों ने स्टेक्स ऐड किया है. एंड दिस इंक्रीज ऑफ स्टेक इज इन दिस लास्ट क्वार्टर, द करंट क्वार्टर, लेटेस्ट क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. यस. एंड इफ आई वांट टू मॉडिफाई दिस, आई कैन सिंपली ऐड, मुझे देखना है कि ये तीनों ने स्टेक इंक्रीज किया है, उसके साथ साथ क्वार्टरली सेल्स भी ग्रो हुआ है एंड क्वार्टरली प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है. So quarterly net profit growth should be greater than 12, let's say, and in the same way,
quarterly 12 मतलब quarterly sales growth, that this is growth, so growth is always in percentage, so ये 12% है अच्छा कि 12%. क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 12% से ग्रो हुआ है एंड Okay. क्वार्टरली सेल्स भी 12% से ग्रो हुआ है. तो 29 में से सिर्फ 14 कंपनीज बच गया जिसमें Okay. प्रमोटर ने भी बाय किया, एफआईआई ने भी बाय किया, डीआईआई ने भी बाय किया. उसके साथ साथ उसका क्वार्टरली सेल्स ग्रो 12% से हुआ एंड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी 12% से ग्रो हुआ. So in these are the companies which you can track and look for opportunities if you find any good. So once you setup. have the parameters defined, let's say अभी इतना सब define करके you have only कितना 14 companies. Yes. इसका group save करके you can go to so I charting and so analyze the individual charts. Yes. Because ऐसा भी we have seen कि turnaround हो सकता है या profitable हो सकता है, but the chart is still weak. Yeah. Especially because of current market conditions, since broader market is still weak. Most of the stocks will be weak on technical basis currently. So इसीलिए we just have to get a basket of stocks ready कि ये सारे companies अच्छे हैं and keep them on watch technically. And keep them on watch list and then we can track कि अगर वो companies technically strong हो रहे हैं तो. So in the same way, so अब अगर ये 8 stocks का मुझे सेव करना है तो I will save this group and then I can go to zone. Zone में R zone में जाके I can run any of the price scanners or in fact any of these I can even run a breadth indicator, breadth scanner on these group. I can even run RS scanners. Or you can just, since अभी कितना only 14 stocks, you can check each chart on its own. So on the chart scroller, if I select the group, so I had. तो ये group आने के लिए you have to refresh zone yes. once. Okay. तो zone को एक बार refresh कर लेंगे तो यहाँ पे apply I can select the group. यहाँ पे जैसे मैंने radar पे प्रसिद्ध के नाम से group save किया था. तो in the my group section I can see the group का नाम that is प्रसिद्ध here. And if I like apply on this, then मैं simply फिर यही arrows को press करके I can scroll all the charts. तो next करके you can next करके सारे चार्ट in fact every single chart is still bearish. ये थोड़ा bullish लग रहा है. Yes. So in this way we can even save we can run a scan on radar, save the group and then we can track technicals for those. So does this also mean that whenever Nifty or the broader market turns up from wherever, maybe tomorrow or whenever after the budget is over now, no one has any clue where the market is going, especially because of the huge moves today. But that also might mean these might be the stocks which will definitely outperform if market turns around. So we cannot claim that these will outperform, but we can keep these stocks on radar or we can keep these stocks on watch list and see if there are any good setup appearing or not. Yeah. So yeah, because there are some people who don't want to even trade short term on fundamentally bad companies. Yes. So they will they can just make this as a small watch list. Yes. And take a trade whenever they get a setup over here. Yeah, exactly. That does not necessarily mean that these will outperform. That is not the case. Definitely, because So here we saw a few more scanners, and there are so many possibilities that you need to define exactly what kind of scan you want to do, what are the parameters you want to scan for, and then like he has shown, save that group and open it in zone where you can see the individual charts, or you can again scan them for technical parameters and then keep them on your watch list for any whenever they look satisfy your technical parameters. So you don't have to buy a falling stock even if the company is good fundamentally, or even if FII holding is increased, you don't have to buy a falling stock. There is no point in catching a falling knife. So take the trade only when the technicals are in favor. And like we said, of course, we will come up with more features which are going as continuous, which is a continuous activity. And maybe in future, whenever we have some more interesting features, we'll come back. So thank you, Prasid, and hope you enjoyed this short video. So do subscribe to the channel, like it, and share it. Thank you. Thank you.